Tonight we begin with a special story. The story of a man who should have been a national icon, who should have been applauded, who should have been celebrated. Instead, the man who is now known as India's Blade Runner, a man who lost his right leg in the war of 1999, has had to run from pillar to post to just get what is his due. Here at the Kargil Memorial in Dras, this moment is all about mourning the loss of those who put country before self in 1999. But it's also about something more, something intangible that is difficult to describe. It's about pride, it's about honor, it's about celebrating the Indian soldier. But today, as we remember those who died in 1999, what of those who survived the war but whose lives were forever changed by the scars and wounds of battle? Today we bring you the story of 40-year-old Major D.P. Singh. His leg had to be amputated in 1999. He was stationed in Akhnur. Since then, he has become one of the country's most preeminent blade runners. But his story is extraordinary for a number of reasons. One, of course, is his own fortitude. But listen then to his harrowing story in his own words of the fight he's had to wage since then for both his dues and his dignity. He's already won the race hands down when it comes to courage and dignity. If you watch Major D.P. Singh stride and sprint, you would not believe that this magnificent runner lost his right leg during the Kargil War of 1999. He was all of 25 years old when mortar fire from the Pakistani side ripped through his body. At first, DP was declared dead on arrival at the field hospital. When he was revived, the cost was the amputation of his right leg. Now, for somebody like you, for a soldier, to deal with losing your leg, ऐसा लगता होगा कि जिंदगी खत्म हो गई है. कुछ देर के लिए तो लगता ही होगा. Well, to be very frank with you, I don't know, for me, I feel that it is all God-guided life. Because I take motivation from the first thought which struck me when the amputation news was shared with me. And that perhaps thought was by God gifted only. मैंने ये सोचा था कि this is a new life for me and this is a new challenge to find out that how people like me live. And perhaps someday I will become I'll do something which will be motivation for people of my type of category people. So instead of giving up on life, you became, as you are now known as India's Blade Runner. You started running marathons. You wanted to come back to rally sports. How did you find the strength to train yourself for this? How did you find that inner strength? See, I belong to Sikh religion, right? And Sikh religion is, the history itself says they are, Guru have taught us to be saint and soldier. And a soldier and the type of life they have lived, they have sacrificed the whole family and, everything for the cause of goodness. So, somebody who's coming from that type of a culture, I mean, I just lost a leg, nothing else. So, how can I just, start giving up on life? That's one. Secondly, it's a second life for me. अगर एक बैट्समैन को भी कैच छोड़ जाता है तो लाइफ लाइन मिलती है, उसके बाद वो कई बार सेंचुरी मार देता है. Why should not I use that life? DP Singh's heroism should have made him a national icon. Since losing his leg, he's clocked 12 half marathons. We should have decorated him, applauded him, celebrated him. Instead, for the past decade, the young major, now a full-time blade runner and motivational speaker, has had to fight a compassionless bureaucracy, not just for his full pension, but even to be recognized as a war-wounded soldier.
Major DP Singh was on duty at the Akhnur border on the Jammu side and thus is technically not recognized as being part of the theatre of war. So you found, correct me if I'm wrong, you found that even though you almost died during the Kargil war, जिस तरह से कारगिल को और ऑपरेशन विजय को नोटिफाई किया, they did not recognize you as a Kargil war wounded. ये थोड़ा समझाएं. देखिए, कारगिल वॉर जो है वो हम जानते हैं आम शब्दों में जी. एक्चुअल में ये ऑपरेशन विजय है जी. और ऑपरेशन विजय का मेन हब जो था, पर आप जहां पर आप भी गए थे, वो कारगिल, मशको, द्रास, बटालिका और ये सेक्टर था जो सिर्फ 2 आर्मी की डिवीजन से कवर होता था. लेकिन लड़ाई पूरी एलसी पर चल रही थी और shelling, RT firing, everywhere. everywhere. In fact, the area where I was posted is the most difficult area when there is a war. 65-71 war is fought in the Chicken Neck area in the most dreaded way. Yeah. Everybody knows about that. तो मैं वहां पे इंजर्ड हुआ जहां जो कि लाइमलाइट में नहीं था. Now, you know, somebody who is sitting in the air conditioned office, it is very difficult to find out कि लाइन का डिफरेंस कितना होता है, राइट? तो वो डिवीजन की लाइन के अगर दूसरी तरफ कोई इंजर्ड हो रहा है तो उसको कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है ऑपरेशन विजय कारगिल के तरीके से. तो यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड टुडे बाय द कंट्री एज अ वॉर वुंडेड सोल्जर हु डाइड इन कारगिल. वो उसके पीछे कुछ और भी कहानी है. अच्छा. आई हैड टू गो टू कोर्ट to Armed Forces Tribunal to fight out and prove that I am a war casualty in spite of the fact कि मेरे को mention and dispatches प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन खुद आया हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद दिया हुआ है कि ऑपरेशन विजय में आपको मेंशन एंड डिस्पैचेस अवार्ड किया जाता है. उसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सीडीए ने मेरे को जो पेंशन दी वो सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन दी, नॉट वॉर वुंडेड, नॉर वॉर इंजरी पेंशन. डज दैट मेक यू फील टेरेबल? Well, I feel sad because a young soldier, right, a youngster who is going there, ज्यादातर लोगों की जो जख्मी हुए हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो यंग ही थे. क्या वो जाने 20s, जो मुझे याद है, मैं तब 26 साल की थी, सोल्जर्स वर यंगर देन मी. सो क्या वो जाने से पहले ये सोचता है कि मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स भर रहा हूं उसमें मैं एड्रेस कौन सा लिखूं, क्योंकि शायद बाद में मैं इंजर्ड हो जाऊंगा या मेरी मौत हो जाएगी तो मेरे पेरेंट्स को या मेरे को जो बेनिफिट मिलेगा वो अलग होगा. क्या डिफेंस मैटर स्टेट का है या सेंटर का है? क्या ये सोल्जर सोचेगा उस समय जाने से पहले कि यार अगर मैं लाइन के उस तरफ जाके लड़ूं तो शायद मेरे को मेडल मिलेगा या कुछ होगा? आई मीन, हु द हेल हैव सो मच ऑफ टाइम एंड यू नो थॉट्स? देयर यू आर फाइटिंग विद पैशन, जुनून से फाइट करते हो आप, सोच के नहीं फाइट करते. जिसने सोच लिया वो तो मर गया वहीं. लेकिन ये सब जब सोचा, बाहर आके जब देखने को मिलता है कि आज मैं तो ऑफिसर हूं, यू नो, उस जवान की क्या हालत है जिसका शायद इतना सोच ही ना हो. The past decade has been a measure of DP Singh's fortitude and forbearance, but it has also been a chronicle of a shamelessly cold, almost cruel system. The Major's disability was reduced in an unexplained decision from 100% to 90%, reducing the pension he would get. He has spent the last 7 years locked in litigation and chasing files for not just his dues, but also for his basic dignity. आपके जैसे बहुत और भी सोल्जर्स हैं, वो आजकल एमओडी के साथ लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, एक ब्यूरोक्रेसी के साथ. एमओडी का क्या रिस्पॉन्स रहा है आपके केस? एमओडी, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने 2012 में मेरे केस के ऊपर डिसीजन दिया और बोला कि इतने ज्यादा इंजर्ड सोल्जर को आप क्यों धक्के खिला रहे हो, प्लीज रिलीज ऑल द बेनिफिट्स. लेकिन उस ऑर्डर के ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है. मैं 2012 में 2 महीने वेट करने के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर के लिए फाइल किया पिटिशन. वो पिटिशन आज 2 साल होने वाले हैं, अभी अगस्त में फिर से हियरिंग है. क्या कहते हैं वो? एमओडी चक्कर कटवाता है. उसमें लिखा हुआ है, PS4 डायरेक्टर बोलता है कि एमओडी ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए हैं और शायद उनके कहने पे उन्होंने मेरे को दोबारा चिट्ठियां भेजी हैं कि आप जाके दोबारा से अपना बोर्ड कराइए. मुझे बताइए ये अमाउंट्स, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ये किस चीज, what amounts are we talking about? Because I have the information that many wounded soldiers, बिल्कुल छोटी-छोटी अमाउंट्स ऑफ मनी पर एमओडी ऐसे धक्के खिलवा रही है. देखिए, पेंशन जो मेरे को आज की डेट में मिल रही है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप हंसोगे. बताइए. मुझे कुल मिला के 14,000 रुपए पेंशन मिल रही है और जो वॉर इंजरी पेंशन होनी चाहिए वो एज ऑफ टुडे, जब मैं रिटायर हुआ था, वॉर इंजरी पेंशन इज एक्चुअली जो जब मैं रिटायर होता है कोई बंदा, उस समय जो उसकी लास्ट पे ड्रॉन होती है, जी जी, विच इज मच मच मोर हायर देन व्हाट आई एम गेटिंग टुडे.
To add insult to injury, 3 different bureaucracies in 3 different states of India refused to help him or his family in the aftermath of the battle injury. जब मैं इंजर्ड हुआ हूँ उस समय मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी दिल्ली में रह रहे थे तकरीबन पिछले 10 साल से। अब उन्होंने कहीं पे घर नहीं बनाया, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि नहीं बना पाया मेरे पिताजी घर। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास पढ़ाई करी है रुड़की में। अब जब मैं एकेडमी में था IIMA में, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वहाँ पर मैंने ऑब्वियसली जो घर दिया रुड़की का दिया, तो मेरे पिताजी ने दिल्ली गवर्नमेंट को अप्रोच किया क्योंकि वहाँ पर उनके पास वो रहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे अगर आपने कुछ फंड इसमें है। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि आपके जो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वो रुड़की का एड्रेस है जो यूपी में है। जब यूपी गवर्नमेंट को अप्रोच किया तो यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि वो तो हमने अब उत्तराखंड बना दिया। उत्तराखंड बनाया 2000 में, मैं इंजर्ड हुआ हूँ 15 जुलाई 1999 में। उत्तराखंड के पास जाते हैं तो उत्तराखंड बोलते हैं हम तो नए हैं, हम तो वैसे ही अभी कुछ नहीं रखते, तो क्या देंगे। अब मजे की बात यह है कि क्या मैं उत्तराखंड के लिए लड़ा, या मैं यूपी के लिए लड़ा, या मैं दिल्ली के लिए लड़ा, या मैं अपने देश के लिए लड़ा? किसके लिए लड़ा मैं? मुझे ये समझा दीजिए। And that is the question that commemorative anniversaries like this one must force the nation to answer. As we remember those who died, what of those who live on with their war wounds, surviving entirely on extraordinary personal courage, but left at the mercy of a heartless system that rebuffs them instead of respecting them? In Kargil, Barkha Dutt for NDTV.